Hello everyone, hope you all are doing well. So in today's video, we are going to learn about Guthrie's contiguity theory of learning. It's one of the fundamental theories of learning. अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग की तीन फंडामेंटल थ्योरीज हैं। एक है थॉर्नडाइक की, एक है गथरी की और एक है हल की। हम पढ़ेंगे आज गथरी वाली। सो पहले तो हमें पता होना चाहिए गथरी है कौन। इनका पूरा नाम क्या है? एडविन रे गथरी। Like Guthrie was a behaviorist who believed you learn things because your action and the situation happen together at the same time. इसमें हुआ क्या था बेसिकली कि पैवलॉव का जो आइडिया था क्लासिकल कंडीशनिंग का, उसको मिक्स किया गया था अपने खुद के बिलीफ के साथ कि जो लर्निंग है वो एक ही ट्रायल में हो जाती है जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक साथ होते हैं। किया गया था गथरी ने एक्चुअली। गथरी एंड हॉर्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक पजल बॉक्स यूज किया था कैट्स के लिए, सिमिलर टू थॉर्नडाइक, बट गोल जो था वो डिफरेंट था। They watched around 800 escapes. I mean, you really need patience for that. But what did they observe? Each cat learned its own weird way of escaping. Like, एक cat पोल को प्रेस कर रही है, दूसरी अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रही है strangely. Some might scratch something, but each cat stuck to its own escape style. And this is because the method the cat used last became the learned method. ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इस चीज को हम पोस्ट्रेमिटी बोलते हैं, बट इट वाज बिकॉज द मेथड द कैट यूज्ड लास्ट बिकेम द लर्न्ड मेथड. Cats stopped caring about the food outside the box, like they didn't have any interest in food which was outside the box. Food was not the main motivator. Reinforcement wasn't necessarily for learning. It was just performing the escape movement one was enough. And cats didn't try new ways. They repeated same exact behavior again and again. And this is called stereotype behavior. Because Guthrie believed learning is equal to last movement plus same stimulus, which leads to association fixed, like fixed association. No trial and error like Thorndike, no reward needed like Skinner. Just what I did last time when the box opened, I'll do that again. तो क्या कंक्लूजन निकाला था गथरी ने? अह, तीन चीजें, तीन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बोले थे. लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी, लाइक वट एवर रिस्पॉन्स अकर्स एट द सेम मोमेंट एज द स्टिमुलस गेट्स लर्नड. देन प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट्रिमिटी, लास्ट बिहेवियर जो भी हुआ है एक सिचुएशन में, इट बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट लर्न रिस्पॉन्स. मूव. देन वन ट्रायल लर्निंग, यू डोंट नीड रिपीटेशन, एक बार स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग हो गई, हैबिट बन जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैट ने एक स्ट्रिंग पुल की, डोर खुल गया. नेक्स्ट टाइम फिर से स्ट्रिंग पुल की. क्यों? क्योंकि लास्ट थिंग, दैट वाज द लास्ट थिंग इट डिड बिफोर एस्केप. एंड इफ इट टर्न्ड इट्स हेड लेफ्ट बिफोर पुलिंग, दैट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द चेन. ठीक है, मतलब अगर उसने अपना हेड लेफ्ट की तरफ पुल टर्न किया था पुलिंग से पहले, तो वो भी एक पार्ट बन जाएगा उस चीज का. लाइक वो स्ट्रिंग पुल करने के साथ हेड भी लेफ्ट टर्न करेगी. एंड नो रिवॉर्ड इज नीडेड, जस्ट लास्ट थिंग वर्क, सो आई रिमेम्बर दैट. ठीक है. देन मूविंग ऑन, Guthrie's law of contiguity. All learning basically comes down to one simple rule. And what is this rule? Things that happen together gets connected. तो हमें क्या याद रखना है? मतलब ये एक सिंपल सी चीज है जो हमें याद रखनी है. एंड यही हमें मेन पॉइंटर है. इफ यू आर मेकिंग नोट्स देन मेक अ नोट ऑफ दिस, कि थिंग्स दैट हैपन टुगेदर गेट्स कनेक्टेड. दैट्स इट. Stimulus plus response occurring at the same time is equal to learning. He gave two explanations, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. A combination of stimuli which has resulted in a movement on its recurrence will tend to be followed by that movement. इसका मतलब क्या है? If something made you do an action once, then the next time the same situation appears, you will do the same action again. For example, last time the doorbell rang, you walked to the door. Next time
bell bajegi, you will walk again because your brain glued the two events together. What is being noticed becomes a signal for what is being done. Basically, the things you see, hear, or notice in that moment becomes clues or signals for doing the same response next time. For example, you notice कि phone की light जली, your brain immediately goes कि pick it up, ठीक है, for answering या फिर checking the message, whatever. If you do something in a situation and later you find yourself in the same situation, you will repeat the same behavior because your stimulus and response got associated due to happening together, जिसको हम contiguity बोलते हैं basically. ना कोई reinforcement चाहिए, ना reward, ना practice. ठीक है? These two things occurred together, so I am linking them. For example, you touched a hot pan and pulled your hand away क्योंकि गरम गरम लगा. ब्रेन ने ये इंस्टेंटली सीख लिया क्योंकि दोनों चीजें साथ में हुई. अब नेक्स्ट टाइम यू विल सी अ हॉट पैन, योर हैंड विल स्टे फार फार अवे. दिस इज नोन एज कॉन्टिगिटी. देन मूविंग ऑन टू वन ट्रायल लर्निंग, दे जो भी बिहेवियरिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी में, कि जितना ऑफन स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा साथ में उतनी ज्यादा लर्निंग होगी. ठीक है? लाइक इफ यू प्रैक्टिस ओपनिंग अ लॉक मेनी टाइम्स यू लर्न इट बेटर. तो उन्होंने क्या कहा था सारे बिहेवियरिस्ट ने, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा लर्निंग. बट गथरी ने इनको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है. दे ही रिजेक्टेड इट. उसने क्या बोला कि a stimulus pattern gain its full learning strength the first time it is associated with a response. You don't need repetition, you don't need practice, you don't need more pairings. एक stimulus response pairing leads to full learning. That's it. खत्म कहानी. Then, like एक बार हॉट पैन टच कर लिया तो यू विल लर्न नॉट टू टच इट अगेन. एक बार हाथ जल गया, 10 बार जलाने की जरूरत थोड़ी है. एंड व्हाई डिड ही बिलीव दिस? क्योंकि if stimulus and response happen together once, the brain immediately forms a complete connection. There's no half learning or building over time. It's instantly done. Learning becomes complete after one pairing between stimulus and response. The association doesn't slowly get stronger, it's full strength right away. Guthrie के according repetition से learning strengthen नहीं होती. It only gives you new stimulus response association because every tiny change in a stimulus leads to new learning movement. Then what is the recency principle? अगर मैं simple language में बोलूं, the thing you did last is the thing you will do next time. uh, because एक तो कॉन्टिगिटी वाला प्रिंसिपल है, देन वन ट्रायल लर्निंग है. These two naturally lead to recency. Whatever happened most recently gets learned the strongest. Like if you are trying to open a door and you try 5 different things, push किया, pull किया, kick किया, knob turn किया, knob hard तरीके से turn किया, door खुल गया. Your brain doesn't care कि पहले 4 बार क्या किया. इट जस्ट रिमेम्बर कि लास्ट टाइम ऐसे किया था तो यही करना है. ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम यू विल ट्राई, यू विल डू दैट थिंग फर्स्ट कि चलो हार्ड तरीके से ही पहले टर्न करते हैं नॉट को. ठीक है? देन देर इज movement produced stimuli. Guthrie said between stimulus and final response, there's actually a sequence of mini steps, and these mini steps are caused by body's own movement. इन्हीं को हम movement produced stimuli बोलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल फोन रिंग हुआ, यू विल वॉक अक्रॉस द रूम, देन यू विल पिक इट अप. तो राइजिंग फ्रॉम चेयर, वॉकिंग टुवर्ड टेलीफोन, पिकिंग अप telephone, that all comes under movement produced stimuli. So external stimulus starts the first response, then first response produces new internal stimulus, then that internal stimulus triggers next response. Next response produces next stimulus, and this goes on till you reach to the final response. ठीक है? Then moving on to learning of acts or behavior. Guthrie said when we learn something big, जैसे कि driving,
क्रिकेट खेलना, डांस सीखना, इट लुक्स लाइक वन स्किल बट इसमें बहुत सारे स्मॉल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मूवमेंट होता है कि एक बहुत ही टाइनी सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन, वन स्मॉल स्टेप। फॉर एग्जाम्पल मूविंग योर फिंगर, टर्निंग योर रिस्ट, प्रेसिंग अ पेडल। ठीक है, अ सिंगल मूवमेंट इज लर्नड इन वन ट्रायल क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स साथ में हो रहा है। ठीक है। देन दूसरी चीज है एक्ट। एक्ट इज बेसिकली अ होल स्किल और बिहेवियर मेड अप ऑफ मेनी मूवमेंट्स हैपनिंग इन सीक्वेंस। एग्जाम्पल, कार चलाना सीखना, क्रिकेट बॉल हिट करना, नाम लिखना, गिटार बजाना, स्विमिंग करना, टाइपिंग करना। ये एक ट्रायल में लर्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक जो एक्ट होता है उसमें thousands of stimulus response links chained together होते हैं। Right? I hope this is clear. Then there is role of reinforcement or reward. गथ्री ने बेसिकली क्या बोला कि गथ्री हॉर्टन कैट एक्सपेरिमेंट में क्या नोटिस किया गया, कैट्स जो थी they ignored the food placed outside the box. Sometimes the cat escaped and just walked away. They didn't even look at the food. But guess what? They still escaped faster next time. तो गथरी ने क्या कहा? Food या reward is not causing the learning. Stimulus response connection forms reinforcement के बिना भी। ठीक है, तो he didn't agree with Thorndike's law of effect. So what does reinforcement do in Guthrie's view? Reinforcement does not strengthen learning. Reinforcement only protects the learned behavior from being interfered with. Reward doesn't make learning stronger. It simply prevents other competing responses from happening right after the learned one. For example, the cat pulls the pull, door खुल गया. The cat's brain learns that instantly. ठीक है, फूड और नो फूड लर्निंग तो हो गई है ना, बट अगर फूड होता तो कैट जो होती वो रैंडमली मूव नहीं करती, रैंडमली मूव करना बंद कर देती बिकॉज इट्स ईटिंग. सो इट डजेंट क्रिएट न्यू stimulus response associations that might override the correct one. सो मतलब फूड क्या है? फूड इज बेसिकली लाइक कि स्टे स्टिल, डोंट ruin द लर्निंग यू जस्ट मेड. ठीक है, कि मतलब कोई नया स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन ना बन जाए जिससे पुरानी लर्निंग वीक हो सकती है. रिवॉर्ड बस उतना ही काम करता है. ठीक है. मतलब फॉर गथरी reinforcement इज इक्वल टू प्रिजर्वेटिव, नॉट टीचर. इट प्रोटेक्ट्स लर्निंग, इट डज नॉट क्रिएट और strengthen it. Right? Then there is forgetting. Forget everything Freud said, right? Guthrie has a totally different vibe. की आइडिया क्या था? फॉरगेटिंग एक ही ट्रायल में हो जाता है लर्निंग की तरह. यू डोंट फेड और लूज मेमोरी स्लोली, यू फॉरगेट द मोमेंट एंड ओल्ड एसआर कनेक्शन गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन. फॉरगेटिंग का मतलब क्या है? न्यू मोमेंट रिप्लेसेस ओल्ड मोमेंट. व्हेन यू आर इन अ फेमिलियर सिचुएशन which is like stimulus, you perform a different response, the new SR link overrides the old one. Contiguity explains forgetting, like stronger or newer stimuli create a new stimulus response link, old habits get blocked. You always open the drawer by pulling it. One day you accidentally push it and it opens. Your brain learns the new movement. Next time you push, old behavior forgotten. Forgetting is equal to interference, not decay. मतलब नो मेमोरी फेडिंग, जस्ट न्यू स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस इंटरफेयरिंग विद ओल्ड वंस. इट्स नॉट लाइक कि हम पुराना वाला भूल गए, इट्स जस्ट दैट हमें नया वाला ज्यादा याद है. देन हैबिट फॉर्मेशन. Habit is basically a response that has become linked to lots of stimuli. The more cues that trigger the response, the stronger the habit. Example, smoking becomes super strong habit because you are doing it after food, with tea, with friends, when anxious, when bored, when walking. So habit is everywhere. A habit is strong when many different stimuli are capable of eliciting the same response. ठीक है, कि स्ट्रेस हो रहा है, चलो कर लिया. चाय पीने जाना है तो चाय के साथ छुट्टा चाहिए. Then habit breaking methods. He gave three methods. ठीक है, तीन मेथड है: थ्रेशोल्ड, फैटीग और इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स मेथड. थ्रेशोल्ड मेथड क्या बोलता है?
Expose the person to the habit triggering stimulus at a very low level, low enough that it does not trigger the habit. Then slowly increase stimulus strength. मतलब नया बिहेवियर ग्रेजुअली स्लिपिंग कर दो. लाइक अगर एक इंसान जब एंग्शियस होता है तो वो नील बाइट करता है, तो बहुत ही माइल्ड ट्रिगरिंग एंजाइटी ट्रिगरिंग चीज से स्टार्ट करो, कोई एक स्लो सस्पेंस सीन. एंड वंस दे डोंट बाइट, ट्रिगर को इंक्रीज कर दो, थोड़ी ज्यादा सस्पेंसफुल मूवी दिखा दो. देन फैटीग मेथड क्या है? Someone, it fatigue method forces the person to perform the habitual response over and over until they literally get tired of it and stop. ठीक है, गोल क्या है? Exhaust the habit. Example, someone checks their phone constantly. Make them check it non-stop for a long period. कि अरे 2 मिनट होगा, फिर चेक कर. इवेंचुअली क्या होगा कि ओ गॉड दिस इज बोरिंग, तो रिस्पॉन्स खुद वीक हो जाएगा. Then incompatible response method, it means introduce a new response that is incompatible with the bad habit. Both responses cannot occur at the same time. गोल क्या है? ओल्ड हैबिट को रिप्लेस कर दो फिजिकली इनकम्पैटिबल न्यू वन से. You cannot run and smoke at the same time. You cannot bite nails and hold a stress ball tightly. You cannot procrastinate and do focus time simultaneously, right? तो ऐसी मतलब इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स मेथड का मतलब यही है. देन पनिशमेंट. गथरी का बहुत ही डिफरेंट टेक था पनिशमेंट पे, अगर हम कंपेयर करें स्किनर से या क्लासिकल बिहेवियरिज्म से. मतलब पनिशमेंट डज नॉट वर्क बिकॉज इट हर्ट्स. गथरी का कहना था पनिशमेंट तभी वर्क करता है व्हेन द पर्सन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम स्टिमुलस. लाइक न्यू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की वजह से हो रहा है. ठीक है. Then why pain doesn't matter in Guthrie's theory? Pain does not create learning, contiguity does. So punishment is only effective when the punishment and situation or stimulus occur together and they produce a different response instead of the old one. For example, child touches a hot stove, burns his hand. Next time, stimulus, seeing stove, child pulls hand back instead of touching it. So learning happened because the stimulus, stove, got connected to a new response, not because ouch taught them something. ठीक है, मतलब इसलिए नहीं कि वो जो उन्होंने का रिस्पॉन्स आया था हाथ जलने पे कि ouch, उस चक्कर में लर्न नहीं हुआ है. राइट. देन देर इज समरी. तो तीन प्रिंसिपल है. पहला है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. मतलब गथरी की ये जो थ्योरी थी क्वांटिगिटी की, इससे तीन प्रिंसिपल निकल के आए: प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉस्ट्रिमिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या है? Any stimulus that accompanies a behavior or immediately precedes it by less than half a second becomes a cue for that behavior. मतलब whatever is present right before or during a behavior becomes associated with it. For example, if music is playing while you study, music becomes a cue for the study behavior. Later, that same music may make you feel like studying. Then, principle of posterity. Uh, a stimulus followed by more than one response only becomes associated with the response closest to the stimuli. That is the last response. Whatever you do last in a situation is what gets learned. For example, if you try 5 different ways to open a bottle or a lock, and the last thing you do works, for example, twisting it harder, uh, then you learn that last moment. Principle of response probability. The chance of a particular response happening depends on how many stimuli for that response are present. Simple meaning is more cues leads to higher chance the habit or response will occur. This explains habit strength also. For example, if you smoke with coffee while driving, after meals, with friends, when stressed, then all these becomes cues for smoking. So you are more likely to smoke because the stimuli for the habit are everywhere. ठीक है, सो यही था. ये तीन चीजें याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉस्ट्रिमिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी.
तो गथरी की जो थ्योरी थी कॉन्टिगिटी की, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ, वी हैव कवर्ड इट होल। क्या क्या करना था, लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी कर ली कवर, वन ट्रायल लर्निंग हो गया, रिसेंसी प्रिंसिपल हो गया, मूवमेंट प्रोड्यूस स्टिमुलाई फंक्शन भी हो गया, लर्निंग एक्ट्स और बिहेवियर भी हो गया, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड भी हो गया, फॉरगेटिंग एंड एक्सटिंक्शन बिहेवियर भी हो गया, रोल ऑफ पनिशमेंट भी हो गया, मोटिव्स एंड ड्राइव्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मोटिव्स एंड ड्राइव्स का वही है ना कि मतलब लाइक रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड वाली जो चीज आई थी उसी से रिलेटेड है, एंड लर्निंग कैन बी ट्रांसफरेबल, राइट। तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इफ देर इज एनी डाउट प्लीज डू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।